Viewer advice: the following video contains content that may disturb some viewers. This is INBC World News. You are watching INBC World News. International news broadcasting content. INBC News. Breaking news. INBC World News exclusive. "100 days of Russia-Ukraine war." 100 days of Russia-Ukraine war news update. INBC World News anchor Brindesh Chaturvedi. You are watching the red space of Ukraine geographic status. Recently, 100 days of Russia-Ukraine war news updates. The red space are geographic status of Ukraine, where Russia कंट्रोल रो रहा है और उसके लोग भी अपने आंसू पहुंच रहे हैं। काफ़ी हौसला है उन लोगों में, लेकिन जेलस की बताते हैं कि यहाँ पर औरतों के साथ, बच्चों के साथ और निरीह लोगों के साथ, मासूमों के साथ अन्याय हुआ है और यह युद्ध अपराध की बहुत बड़ी घटना है जो यूक्रेन में घटित हुई। मैं सोचता हूँ ये बहुत ही खतरनाक है। एक तरफ व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि ये सब की रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो उनकी जिम्मेदारी है, वो यूक्रेनियनों के ऊपर ही है जो भी कुछ घटित हुआ है। उन्होंने ही खुद ये क्रिएट किया इस युद्ध के लिए। 100 days of Russia-Ukraine war. What's gone, what's left, things that are affected. People's status in Ukraine, foreign relation in Ukraine, business status in Ukraine, historic monuments in Ukraine, Russian and Ukrainian troops are currently fighting in Donbas region. Zelensky says Russia is currently occupying about 20% of Ukrainian territory. You are watching INBC World News. 100 days of Russia-Ukraine war news updates. Anchor Brindesh Chaturvedi. आप देख रहे हैं रशिया यूक्रेन में युद्ध अपराध की ये घटनाएं जो अब तक घटित हुई। आप देख सकते हैं कितना बेरहम तरीके से यहाँ पर बसे बसाए घरों को खंडर बना दिया गया और यहाँ के लोगों के साथ बहुत ही निर्मम तरीके से बदसलूकी की गई, बच्चों की हत्याएं की गई, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। और बताते हैं वहाँ के लोग कि हम किस तरीके से यहाँ पर जीवन यापन करें। इस पूरे यूक्रेन को इस तरीके से बर्बाद कर दिया गया है
इन 100 दिनों में। आप देख सकते हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बताते हैं कि 20% जो टेरिटरी है यहाँ की, उसे पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया गया है रशिया के द्वारा। "100 days of Russia-Ukraine war news update, INBC World News exclusive, एंकर ब्रिंदेश चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं 100 दिन का युद्ध, जिसमें कई घटनाएं घटित हुई, कई न्यूक्लियर प्लांटों पर हमला किया गया, कई घर तबाह किए गए, चर्चों पर हमला हुआ और कई जगह पर उनको तहस नहस कर दिया गया। खाने की पीने की कमी और किल्लत के बावजूद भी यहाँ के लोग सहायता करते रहे और एज ए वॉलंटियर, एक समाज सेवा के तौर पर यहाँ के लोगों ने एक दूसरे की मदद की, जिसमें अमेरिका ने भी काफ़ी सहयोग किया, यूक्रेन की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए। हालांकि खतरा अभी टला नहीं है। बहुत ही ज़ोरदार धमाके, मिसाइलों का हमला इन 100 दिनों के दौरान हुआ यूक्रेन में, जो रशिया ने ज़बरदस्त तरीके से यूक्रेन को तबाह कर दिया। ये 100 दिन बहुत ही खतरनाक साबित हुए और इसमें कई लोगों की जान गई। ज़ेलेंस्की बताते हैं कि हम जब उठे थे जिस समय 100 दिन से पहले, उस समय हमने सोचा नहीं था कि अगला जो समय होगा वो इतना खतरनाक होगा। इस तरीके से हम पर मिसाइलों से हमला किया जाएगा और हमारे बेकसूर लोगों को रशिया के द्वारा मार दिया जाएगा। हमें ये नहीं पता था 100 दिन पहले कि ये बहुत ही खतरनाक युद्ध अपराध इस तरीके से होगा। और यूक्रेन में शांति थी 100 दिन पहले, और अब जो हालात हैं बहुत ही बदतर हैं। यहाँ यूक्रेन के 20% हिस्से को रूस ने कब्जा कर लिया है और आज भी यह युद्ध चालू है। यूक्रेन के 100 दिन युद्ध के, प्रत्येक दिन 5.25 मिलियन चिल्ड्रन जो घटनाओं से काफ़ी डिप्रेस हो गए और उनकी फैमिली अलग हो गई, उनके परिवार अलग हो गए। एटलीस्ट एक दिन में 2 बच्चे घायल हुए, उनको उनके परिवार से अलग कर दिया गया। 250 बच्चे मार दिए गए, 400 घायल हो गए, उनके शरीर पर चोटें हैं और उनके द्वारा बयान किया जा रहा है कि किस तरीके से हिंसा उन्होंने आज देखी यूक्रेन में। इसके लिए यूनिसेफ काफ़ी हद तक मदद कर रहा है और उनको खाने पीने जैसी चीज़ों को डिलीवरी भी कर रहा है। और बच्चों को अब शांति चाहिए। आज के दिन अब आगे अपराध नहीं चाहिए। थैंक्स टू यूनिसेफ, Russia occupies 20% of Ukraine Donbass, devastated. Putin forces close to capturing all of Luhansk. Donetsk under constant rocket fire from Russia. Sweden set to send anti-ship missiles to Ukraine.
After 100 days of war, Ukraine President Zelensky said Russia currently controls 20% of Ukrainian territory. Russian forces have reportedly entered 3620 Ukrainian settlements since the invasion began on February 24. As of today, about 20% of our territory is under the control of the occupiers, almost 125,000 kilometers. This is much larger than of all Benelux countries combined. About 3 lakh kilometers are committed with mines and unexploded devices. Almost 12 million Ukrainians have become internally displaced. More than 5 million, mostly women and children, have gone abroad. Zelensky also said the fighting continues more than 1,000 kilometers from Kharkiv in the east too. He said the Donbas region, once on the most powerful industrial center in Europe, is almost entirely. Lviv Oblast governor said Russia cruise missiles severely damaged railway infrastructure in the region. Russia reportedly launched a missile from the Black Sea, killing at least 5 people. Battle for Severodonetsk escalates. Ukraine army says it carried out over a series of contractors on Severodonetsk, but Russian forces still control Luhansk. Official claim Kremlin forces did not make an heavily on June 2 their attempt to capture the city. Around 800 people are reportedly hiding in several different areas. Bomb shelter under the Azot chemical factory. Ukraine says its counter-offensive moved enemy forces away from some streets or helped its forces capture some. Official says the Russian against the Azot factory, hitting one of the administrative building on a warehouse. Russia is reportedly close to capturing the Luhansk, one of the 2 Ukrainian regions that make up for the Donbas. Ukraine says Russian forces are also trying to attack the town of Chaturvedi in Donetsk. While several areas of Donetsk are under constant rocket fire, Bakhmut and Philovsk are also under. We have tension in the Avdiivka. The governor of Ukraine, the breakthrough is the children, both the Lyman and James areas are the man in which the enemy is trying to advance to capture. These are their essential takes in the north of the region. In addition, the Bakhmut-Lysychansk highway is under constant fire from the Russia, but is controlled by the armed force of Ukraine. Ukrainian army claims to have replied 13 enemy attacks toward Donetsk and Luhansk in 24 hours. A Russian plane reportedly fired 3 missiles toward the Sumy region, injured 3 civilians. Russia already shelled Kharkiv overnight, killing 1 civilian and injuring another. Local officials claim Russian troops have set up 2 second rotation prison near Mariupol. Meanwhile, Ukraine military claims Russia is short of drones used in the one of the Ministry of Emergency Situation. Ukraine is continually switching off Zaporizhzhia nuclear plant with the key losses control of operations. Moscow says us armed drones can't get Russia. Moscow said US plans to mock the Eagle drones to Ukraine. We believe that the United States personally and really adding fuel to fire supplies to not contribute to Ukraine leadership willing to resume. Grey Eagle drones are capable of being armed with Hellfire missiles for battlefield use. TB2 drone and Zuzana 2 chargers for Ukraine. Turkish drone manufacturer Barkada has given a Bayraktar TB2 drone to Lithuania
to be debuted to Ukraine. Director Chaturvedi TB2 after Lithuania approached with the company to fund to buy a drone for Ukraine. TB2 drone have been successful targeting and destroying Russian artillery system or around vehicles. Slovakia has signed the contract to keep the supply of marijuana to Salford, however, Sweden has permission to provide Ukraine with non-economic aid and military equipment including anti-ship missiles. Kyiv says Russia sending Ukraine's grain to Syria. Ukraine embassy operate accused Moscow of sending nearly 1 lakh tons of Ukrainian stolen wheat to Syria. Ukrainian foreign ministry warned the Russian rocket could lead to famine in some region of the world. Russia is urging Ukraine gain in the occupied territory in order to destabilize into third countries. Meanwhile, German Chancellor Angela Merkel, Russia invaded barbaric in the first public speech since leaving office. At first, children in Ukraine saying about the experience during the war in Ukraine, saying about the all situation of violence. They are saying about the after attack of Russia in Ukraine. Days of Russia-Ukraine war news updates. You are watching INBC News exclusive. 100 days of Russia-Ukraine war news updates. Stop the war. Children and families in Ukraine need peace now. Thanks to UNICEF. This is INBC News Worldwide. Editor Brindesh Chaturvedi. You are watching INBC World News.